I am Ratnabhushan. Welcome to the program, The Great Prime Minister in the Great Nation. Good morning, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your per day efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Before starting the program, I would like to read the preamble of our constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. So the most important fact of today's are Modi expresses concern at Australia's visa policy. Raised issue during talk with Prime Minister Turnbull. Australia's newly introduced visa restrictions are likely to impact India. The issue of these visas came up when Australian Prime Minister Malcolm Turnbull called up Prime Minister Narendra Modi on Tuesday. Prime Minister Modi expressed concern about possible impact of the recent changes in Australian regulation for the skilled professionals visa program. The two prime ministers agreed that officials from both sides will remain in close touch on the issue, said a government release. What is 457 policy? This was the first telephone conversation Mr. Turnbull visited to Delhi in the first fortnight of April, after which he announced the scrapping of 457 visa policy that benefited skilled Indian IT workers. So the most important suggestion for many days I am telling to Honorable Prime Minister जी सर हर 2 किलोमीटर पे एक डस्टबिन और वाशरूम होने चाहिए and washroom must be paid. Sir, in memory of APJ Abdul Kalam, there should be a sports इंटरनेशनल स्टेडियम एंड हॉस्टल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन. सर भारत का हर मॉन्यूमेंट मस्ट भी मेंटेन होना चाहिए और उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाए, चाहे वो मगहर हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे चौरी चौरा हो, चाहे गुजरात का सोमनाथ टेम्पल हो, चाहे जामा मस्जिद चांदनी चौक का हो. हर मॉन्यूमेंट मेंटेन होना चाहिए और उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाए. सर सुबह लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, स्पेशली 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक. वो लोग कहते हैं कि सुबह तो फ्री है, तो इसके लिए डेडिकेटेड एक टीम बनाई जाए सो दैट पीपल शुड फॉलो, बिकॉज फॉर एवरीथिंग वी कैन नॉट ब्लेम द ट्रैफिक पुलिस. मेनी टाइम्स द वेल एजुकेटेड, इलिटरेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, वेल एजुकेटेड लोग भी नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए चलते हैं. सर मेट्रो के स्टेशन या मेट्रो स्टेशन के बाहर या अंदर देयर शुड बी अ कटआउट फॉर फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन जिन्होंने भी इस देश के लिए कुछ काम किया हो, सो दैट द पब्लिक मस्ट नो. ट्री प्लांटेशन को एक फेस्टिवल के रूप में डेवलप किया जाए और जिस दिन भी लोगों का बर्थडे होता है किसी का भी, उसको एक फेस्टिवल ट्री फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाए, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाया जाए. सर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल मस्ट बी डिस्प्ले ऑन ईच एंड एवरी पब्लिक प्लेसेस so that the public must know. Otherwise, those students who are preparing for competitive exams, only they try to know what is our preamble, what is fundamental duty and what is fundamental right. इसके अलावा किसी को इससे मतलब नहीं है. बोलने के लिए सब लोग आगे रहे कि डेमोक्रेसी में बोलने का सबको अधिकार है. But I want to ask, how many people of India know fundamental rights, duties and preamble? So sir, it's very important that it should be displayed on each and every public places. सर हर गांव में एक लाइब्रेरी इनिशिएट किया जाना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट के अलावा रिच बिजनेसमैन, बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं, जिनके पास भी है वो प्लीज़ शेयर करें, गांव में एक लाइब्रेरी खोलें और उसको मेंटेन करने की कोशिश करें. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन व्हाट आई एम टेलिंग फॉर मेनी डेज. और इस प्रोग्राम को चलाने का मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि केवल प्रधानमंत्री के बातों को मैं कहूँ. जो भी व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश कर रहा है इस देश में, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे स्कॉलर हो, चाहे बॉलीवुड का एक्टर और एक्ट्रेस हो, कोई नहीं बड़ी एल्स, उसको अप्रिशिएट करना और उसको ये बताना देश दुनिया को कि यस दिस मैन इज डूइंग, दिस वीमेन इज डूइंग फॉर दिस थिंग. सर बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रीड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 it shall be the duty of every citizen of India
to abide by the Constitution, respect its ideal and institution, the national flag and national anthem, to cherish and follow the noble ideal that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transacting religious, linguistic, and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism, and a spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to observe violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to a higher level of endeavor and achievement, and to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. Thank you, Honorable Prime Minister Ji. We are proud on you. Your dedication and hard work is the example for the whole nation. We can make this country more clean, more beautiful, and more glorious. Before ending the program, I would like to say, please share, subscribe, and like, because these all are very, very important for Indian society, for this nation, and for the whole world. Because we the people believe in Vasudhaiva Kutumbakam. We believe that whole earth is our family, and each and every member of this earth is our family member. So it's very important that to create a harmonious relationship is the most important target for all of you. So thank you very much. Wish you all the best. Jai Hind.